Thank you. Next speaker, Srimati Jaya Bachchan. Sorry, I didn't hear. Good. सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि इस देश में अभी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में, इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर। तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। जया जी प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो मैं सर, कोई मुझे इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगी, मगर मुझे वक्त आपको देना पड़ेगा। पार्टी हैव अलॉटेड यू फॉर 4 मिनट्स। झगड़ा होने वाला है सर, सबसे पहले I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and Shraddhanjali to the people who were killed. सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। प्लीज मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? प्लीज। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज Either you speak or I will speak. जया जी आप बोलिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please जया जी mind your प्लीज tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वी शुड हैव प्रोटेक्टेड यू। इट इज आवर ड्यूटी एज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट यू। वी फेल्ड, वी आर सॉरी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू हैड सेड इट, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is. Please be quiet. No running commentary, please. Jaya ji, you please conclude now. Jaya ji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25, 26 people?
What are you going to do with all this? Please. बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. गोला बारूद से कुछ नहीं होगा. No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है. नहीं कहना तो चाहती हूं मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों. जया जी कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज. कल डेरेक ने एक Please. बहुत अच्छी बात कही थी. द वीकर द आर्ग्यूमेंट, द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज. इट्स फैंटास्टिक. आई विल फिनिश. प्लीज. सर, मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें. आई जस्ट वांट टू से बी हम्बल, be kind, be protective towards people who have given you this position and the authority, with hope that you will protect them. Protect them. Say sorry. Please say sorry. Thank you, Jaya Thank ji. you very much. Thank you, Jaya ji. Next speaker, Shri Santosh Kumar P. Now, sir, the House knows that India has faced a special cross-border challenge, not today, not for 10 years, not for 25 years, from 1947. That from few months after our independence, the cross-border terrorism started when so-called tribal invaders were sent across and they came into Jammu and Kashmir. And from that time, sir, we have had to lead the global fight against terrorism. There is no country in the world, especially I would say after 1980s, there is no country in the world which has had to suffer the kind of terrorism, which has taken the kind of casualties we have, which has seen, so many states, so many facilities, so many people attacked in this inhumane manner. But sir, if we have to shape global thinking, if we have to convince others, we must be clear ourselves. And again, I refer to history. Because, why do I refer to history? Because what was decided in the past is not a debating point. The decisions of the past have an impact on the present, have an impact even on the future. We inherit a thinking about us, we inherit a policy, we inherit actions. So, we have to see what actually was the record. Now, the reality, sir, was, if you look for that decade before the Modi government came to power, we have had a series of attacks. And this is well known. In Mumbai in 2006, because this attack is particularly important, 187 people died. Please. In 2000, You cannot dictate what he will speak. No. Please, let him speak. He will speak. Only this will go on record. 2008, आपको जब अपना मौका मिलेगा तो बोले, आप दूसरे को बोलने से रोक नहीं सकते. प्लीज. आप बोले. आप बोले. आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. so आप खुद अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा सुनने को तैयार नहीं. प्लीज. in 2007, 44 people died in Hyderabad. In 2008, the Mumbai attacks of 26/11, the world still remembers it. 246 people died. In Jaipur in 2008, 64 people died. In Ahmedabad in 2008, 57 people died. In Delhi, sir, I am a person from Delhi. I remember the bomb blast which took place in 2008. So, we went through a series of attacks. Now, why am I reminding the House of this? I am reminding... Please, Mr. John Brittas, please take your seat. I am reminding the House because when major terrorist incident happened,
the world watched how did India respond. And the world drew lessons. So how did we respond? After 2006, I refer to the Mumbai train bombing. July 2006 was the bombing. In September 2006, within 3 months, we had a meeting in Havana where it was agreed between the Prime Ministers of India and Pakistan. Instead of holding Pakistan responsible, we said we condemn all acts of terrorism and agree that it's a scourge that needs to be dealt with. And by the way, we will resume our composite dialogue. Now, there are two important points which flow out of it, and they are relevant because this shapes the world's perception of how India is likely to respond. It shaped the world's perception that within 3 months, you are actually equating the victim and the perpetrator. And in a move away from what was agreed to in January 2004 between Prime Minister Vajpayee and General Musharraf, where we Pakistanis had assured us that their territory and territory under their control will not be used to attack us. Now we are saying, yes, terrorism happened. It happened 3 months ago. A lot of people died in Mumbai. But fine, we will go on with the composite dialogue. So